Hello students, today we will study about India agriculture, industries and transportation, and it is the chapter from geography. Geography is the study of places and its environment. Agriculture. India is an agricultural country. Agricultural means खेती प्रधान. इंडिया को खेती प्रधान देश कहा गया है. About 70% of the people are engaged in agricultural activities. इंडिया के 70% पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. दैट वी कैन से द इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रोन होते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर: नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, irrigation farming and plantation. These are the 4 types of agriculture. Now let's study about normal or unirrigated agriculture. Sorghum, millet, corn, groundnut. Due to this process the crops grown are millet, corn and groundnut. The agriculture which depend on monsoon is called normal or unirrigated agriculture. जो एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड है उसे अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं. एंड क्रॉप्स आर मिलेट, कॉर्न एंड ग्राउंडनट. एंड द स्टेट मिलेट इज ग्रोन इन द स्टेट लाइक राजस्थान. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया. एंड नेक्स्ट इन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. कॉर्न इज grown in कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ग्राउंडनट. गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. मीन्स गुजरात में ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा होती है. ड्राई फार्मिंग. ड्यूरिंग मानसून वाटर इज़ कलेक्टेड इन लो लेइंग एरियाज एंड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड. मीन्स मानसून का जो पानी कलेक्ट किया जाता है लो लेइंग एरियाज़ में, वो उसमें से जो फार्मिंग होती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं. एंड द क्रॉप्स वेर ग्रोन ड्यू टू दिस प्रोसेस इज़ wheat. Irrigation farming. Farming is done through irrigation. For example, like wells, lakes, canals, etc. 30% land in India is irrigation farming is carried out. Means 30% जो land है वो irrigation farming के process से होता है. And the crops were grown due to this process are sugarcane. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड. इंडिया में शुगर कैन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में से. कॉटन मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा. ज्यूट ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा. पैडी मीन्स राइस. राइस इज़ द स्टेबल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियंस. ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड गुजरात. These are the different type of irrigation. Now let's study about the plantation. When certain crops are grown in the garden method and taken care of as a garden, it is called plantation. मतलब कोई भी क्रॉप्स गार्डन के मेथड से ग्रोन किया जाता है और उसकी स्पेशल केयर गार्डन की तरह ली जाती है, उस टाइप को प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं. एंड द क्रॉप्स ग्रोन ड्यू टू दिस प्रोसेस आर टी, कॉफ़ी, कोकोनट पाम्स एक्सेट्रा. टी ग्रोन इन स्लॉप्स ऑफ माउंटेन्स. स्लॉप्स मीन्स ऐसा ढलान वाला एरिया जो माउंटेन्स का होता है, उस पर ये टी के क्रॉप्स ग्रोन किए गए जाते हैं. बिकॉज वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ टी प्लांट्स इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन. क्योंकि रूट्स के पास जमा हुआ पानी वो प्लांटेशन को हार्मफुल हो सकता है, इसलिए देर आर ग्रोन ऑन द स्लोपीज ऑफ माउंटेन्स. आसाम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी. आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है. यू कैन सी द पिक्चर. द लेडी इज़ हार्वेस्टिंग मीन्स ग्रोइंग द क्रॉप ऑफ टी एंड हार्वेस्टिंग इट. एंड दिस इज़ द स्लोपी एरिया ऑफ माउंटेन. इन दिस टाइप ऑफ माउंटेन द crop of trees are grown. Industries. Now let's study about the industries of our country. On the basis of investment, number of employees and quantity of production, there are 3 type of cottage industries. First is cottage industries, small scale industries and heavy industries. Now cottage industries. In this type of industries
very less number of employers and less investment, means बहुत कम investment किया जाता है, and it can be managed in home or in small scale house. An example, in this type of cottage industries, the pickle making, matchbox making, papad making, etc. are made. Small scale industries. Some machinery like TV, refrigerator, plastics, toys are made in this type of industries, and some small group of peoples are engaged in this type of industries. Heavy industries. A very large number of investment were done in this type of industries, and a large number of workers are working in this type of industries like cement making, iron steel making are done in this type of industries. Now let's study about industry type and states. Woolen, it is made in cottage type of industries. States like Ludhiana and Punjab. Sugar, small scale industries, Uttar Pradesh and Maharashtra. Cement, heavy industries, states like Gujarat and Madhya Pradesh. Paper in small scale industries, states like West Bengal and Uttar Pradesh. Iron steel, heavy industries. Jute in small scale industries, jute clothes, gunny bags, etc. are made in this type of industries. Petrochemicals, heavy industries, Vadodara and Mumbai. Cotton clothes, small scale industries, states like Ahmedabad, Surat and Mumbai. These are the picture of industries. Transportation in India. Now let's study about the transportation in our India. Roads and transportation are not only used by man to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. मीन्स सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं प्लेस रोडवेज़ यूज़ होता है, मीन्स एक दूसरे के नियर पीपल को भी एक दूसरे से नियर लाता है ये रोडवेज़. मीन्स सम ऑफ योर रिलेटिव्स आर living far from your house, so you have to visit, travel to them, so you can use these roadways. There are 5 types of roadways, or 5 type of transportation: roadways, airways, railways, waterways and pipelines. These are the picture of roadways, railways, waterways, airways. Now let's study about roadways. The road map of India is the biggest one in the world. मीन्स इंडिया का जो रोड मैप है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मीन्स बड़ा है. टाइप ऑफ रोडवेज: विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, state highway and national highway. These are the type of roadways. Railways: metro rails in Delhi and Kolkata. Waterways: inexpensive mode of transportation. Railway means in railway is very large means of transportation. One time so many people can travel from one place to another, and goods also. And waterways is inexpensive mode of transportation. Steamer boats are used to transport passenger and goods throughout the year through Ganga and Brahmaputra rivers. मीन्स गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में ये ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है. Airways, very fast and it is very costly. Airports are constructed for safe takeoff and landing of aeroplanes. मीन्स एयरपोर्ट बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है सेफ लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए. मीन्स वहाँ बहुत बड़ी लैंड एरिया कवर किया है उसके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए. इंटरनेशनल एयरपोर्ट: इट इज़ इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम. मीन्स इन ऑल दिस स्टेट देयर आर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. Indian Airlines provides the service for domestic travel. Domestic travel means in India, only in India it can be import or export. It is called domestic travel. Within the country means within the country itself the transport is done. It is called domestic travel. Air India provides the service for international travel. International means from one country to another country. It can go. It is called international travel.
Ropeways. You can see the picture of ropeways in the mountainous region where roads or railways cannot be constructed, then there ropeways are constructed. Means mountain पर पॉसिबल नहीं है कि रोडवेज या रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर सके, इसलिए वहाँ पर रोपवेज कंस्ट्रक्ट किया गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.